business, we saw how the doctors and how Satish's son have successfully marshaled their time, effort, and done such a great job. But everyone has a social responsibility. This is dawned in almost every successful businessman and successful professional. One of the most accomplished social transformer is amidst us today. Let us give a rapt attention and understand what he has done. Phenomenal job. I would invite Mr. Mayank Gandhi to come on the stage. It's something, it'll take the breath away, the quality of his work. He's transformed, I thought he transformed one district in Maharashtra. Now he says 23 districts across the country. I will not borrow his time. Let us hear from him the way he wants to organize. Please do put in your full attention on the phenomenal work that Mr. Gandhi has done. Thank you. Yeah, you want to show the video first? Yeah. Please see the video first, and then the man will give us a commentary. And I'm requesting him to be very brief because the evening has extended due to the interest level that we've all expressed with the doctors and Varun's presentation. Yeah. Yeah, we'll allow him to talk. कहते थे कि the soul of India lives in its villages. जब मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सुसाइड मराठवाड़ा में हो रहा है, उसकी वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बीड है और उसके अंदर परली तालुका जो है 106 गांव का, इंडिया का वाटर के एवरेज इरिगेटेड एरिया इज 40%, परली का 1.72% है और ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे 3,500 रुपया मंथली इनकम थी टिपिकली और डिप्रेशन में थे, पूरी जनता डिप्रेशन। तो इतनी पॉवर्टी थी, इतना डिप्रिवेशन था, कोई हेल्प नहीं था और 8 साल में 6 ड्रॉट हो चुके थे। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूँ। जैसे अपने शरीर के अंदर 70% पानी की मात्रा होती है, वैसे यहाँ के प्रॉब्लम भी 70% पानी के कारण है। हमारा काम यह है कि दौड़ती हुई नदी को चलना सिखाना है, चलती हुई नदी को रुकना सिखाना है और रुकी हुई नदी को जमीन के अंदर परकोलेट सिखाना है। अप्रैल 15 से लेके मई के एंड तक का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया। लोगों को तैयार कर दिया, गमेला, पावड़ा सब लेके। सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमने सब घर के ऊपर बाहर ताला मार देते थे और सबको बाहर निकालते थे। बोलो चलो अब घर में कोई नहीं जाएगा। और 45-48 डिग्रीज का टेम्परेचर, सुबह 9 बजे तक काम करते थे वो 3 घंटा और शाम को 6 बजे से रात को 1-1.5 बजे तक काम करते थे। यानी इट बिकेम लाइक अ फेस्टिवल ऑफ चेंजिंग देयर लाइव्स। तो ये जो माहौल बना ना, उसके चलते हमने 70 किलोमीटर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाई, 162 तालाब बनाए, ये बड़े वाले 5 डैम बनाए ऐसे। छोटे वाले जो डैम है वो 62 बनाए और अभी आप देखोगे जो 400, 500, 600 फुट के ऊपर वाटर टेबल था वो अब 40-50 फुट पे आ गया। 3-4 साल पहले जब हम आए थे ना तो पूरा सूखा था, अब पूरा देखो सब जगह नजर पड़े वहां तक ग्रीनरी है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ओवर रेटेड है। आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इनकम को तो किसान के अंदर कैपेसिटी है, वो हेल्थ केयर भी देख लेगा बच फैमिली की और एजुकेशन भी देख लेगा। एक सिंगल पॉइंट पे काम करना है तो इनकम। यहाँ पे ना टिपिकली कॉटन और सोया होता था, तो हमने सोचा हम किसान के खेत में अगर चेंज कर देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न
तो अगर जो आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर हम कर सकें तो इनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। और दैट इज द थॉट विच वाज देयर कि मल्टीप्लाई कैसे करें इनकम देश बदलने के लिए। अब फ्रूट का ट्री लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई हमने डिस्कवर नहीं किया कि फ्रूट के ट्री लगाओ और जैसे कोई वर्ल्ड चेंजिंग कोई डिसीजन लिया। लेकिन मुझे फ्रूट प्लांटेशन के अंदर 3 गैप्स दिखे। पहला गैप ये था कि जो फ्रूट का प्लांट होता था ना, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी। तो हम इंडिया में घूम के बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, उनको सैपलिंग्स वगैरह ला के दिए। सेकंड गैप हमें ये दिखा कि जो पारंपरिक जो मेथड से फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग सालों सालों से चल रहे हैं, बाप दादा वो, और रेजिस्टेंस भी इतना होता है ना चेंज करने को। तो मुझे तो लगा कि इसको मैरी करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तरीके में भी बहुत अच्छा ही है, बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है, लेकिन हमने उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ट्रेनिंग्स रख दी है। हर 10 दिन में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर दिया। तीसरा वाला जो गैप था ना, वो सबसे क्रूशियल था। 2019 में हमने 1.46 लाख पपाया के पेड़ लगाए, और एक जगह पे एक क्लस्टर में प्रोडक्शन होने के कारण दिल्ली से, गुड़गांव से, मैसूर से, कलकत्ता से सारे व्यापारी आ गए और यहाँ होटल के अंदर रूम बुक कर दिया और फार्म गेट के ऊपर से बहुत अच्छा रेट देके लेके गए। तो सडनली हमको समझ में आ गया कि जब स्केल के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मार्केट आपके पास है। 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की इनकम किसानों की हो गई है। अब ये वर्स्ट एरिया में अगर हो सकती है तो बाकी के देश में क्यों नहीं हो सकती? अब एक फॉर्मूला मिल गया ना, अब फॉर्मूला मिल गया, देश बदल सकता हूँ, ये कन्विंस हो गया हूँ, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया है। अब लगता है जल्दी से जल्दी लोगों, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, जितने लोगों, और वहां पे मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। गांव में जहाँ 65% इंडिया रहती है, वहां के गरीब की जिंदगी अगर हम बदलते हैं तो ये देश बदल जाएगा। Thank you so much. Yeah, that will be better. मैं समय की मर्यादा को रखूंगा। हाँ। अगर इफ़ यू परमिट मी, मैं हिंदी में बोलूँ तो अभी तक यह लग रहा था कि मैं लंदन में बैठा हूँ, तो अभी थोड़ा अपना देश आ गया वापस। नमस्ते। सब भूखे हैं तो थोड़ा सा ऊर्जा ले आते हैं। नमस्ते। मैं अपनी जीवन की थोड़ा सा जर्नी बता दूंगा, क्योंकि आज समय नहीं है सब और बातें करने का। That will be a little insensitive. Yeah, will restrict it. जी, मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था और 23 देशों में कंसल्टेंसी करता था। और जब बाहर रहता था तो लोगों की ज़िंदगी देखता था तो ये लगता था कि वहाँ के जो कॉमन मैन है वो बहुत डिग्निटी से जी रहे हैं। तो मुझे लगा इस देश में मैं वापस आके कुछ अपना काम करूं। और फिर मैं आया और मुझे ये समझ में आया कि अगर थोड़ा मारना ही है तो ऊपर से मारना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। और अन्ना जी के साथ मिलके मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट किया और बहुत सारे कानून किए। इसके बाद 2011 का मुझे याद है कि इस तरह की एक बड़ी मीटिंग थी, उसमें मैं चेयर कर रहा था और केजरीवाल जी थे, ही वॉज वन ऑफ द स्पीकर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े ने एक कानून ड्राफ्ट किया है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनानी है, तो कैन यू टेक द लीड इन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एक्सेट्रा। तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा कि उस समय मेरी जर्नी अंदर थी, मैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता था, 6-6, 8-8 घंटा मेडिटेशन करता था, तो मैंने मना कर दिया। पर केजरीवाल बिंग केजरीवाल,
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मयंक विल बी लीडिंग द मूवमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर मैंने बोला भैया तेरा फेस देख के तो देश खड़ा होगा नहीं, और मैंने उसका और अन्ना का मीटिंग करा दिया। एंड नाउ यू नो, आप ये सब हिस्ट्री है कि हाउ द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट आफ्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। थोड़ा मैं स्टोरी को इसलिए कहता हूँ कि उसका एक पर्सपेक्टिव आएगा। उसके बाद वो मॉर्फ हो गया एक पॉलिटिकल पार्टी में, आम आदमी पार्टी। और 2014 का मुझे याद है, मोदी जी जीते थे सेंट्रल इलेक्शंस और राज्य के बाद राज्य जीत रहे थे। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और मैंने कहा कि अश्वमेघ का घोड़ा मैं रोकूंगा दिल्ली में। और फिर दिल्ली में जो हुआ, आपको सब हिस्टोरिकल हुआ, 67 सीट जीत गए। और उसके बाद ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग मार्ग भटक गए हैं। एक पावर ओवर प्रिंसिपल, सत्ता ओवर सिद्धांत, और जिस प्रकार से देश बदलने को आए थे, न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज, न्यू पॉलिटिकल नैरेटिव, न्यू पॉलिटिकल कल्चर, उसके बदले में हम मायावती और मुलायम बनने जा रहे थे। और मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था। और ऐसे ही मैं आई कुड रिकॉग्नाइज के ये मैं इसके लायक नहीं हूँ। पॉलिटिक्स काम की चीज़ है, डेमोक्रेसी में होनी भी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, लेकिन उसका जो एक माइंडसेट होता है वो मेरा माइंडसेट नहीं था। ओशो कहते थे कि लाइफ में पॉवर्टी भी है और रिचनेस भी है, तुम्हें चूज़ करना है। और मुझे लग रहा था कि पॉलिटिक्स एक्सट्रीम पॉवर्टी है। तो मैंने 2015 में राजकारण टोटली छोड़ दिया। फिर मोदी जी के वहाँ से फ़ोन आया, राहुल का खुद फ़ोन आया। मैंने बोला भैया कोई गलती हो गई तो मार लेना, लेकिन पॉलिटिक्स में वापस मत बुलाना। लेकिन वो डिज़ायर तो था कि देश को कैसे बदला जाए। यानी आई ऑलवेज केप्ट ऑन थिंकिंग आई वांट टू चेंज द कंट्री। ऐसा छोटा मोटा कोई एनजीओ काम करके, कुछ करके, प्लास्टिक ये करके, ये आई फेल्ट कि द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज़ टू लार्ज for the solution to be meager. The size of the solution has to be much larger than the size of the problem. तो और मुझे ये समझ में आ रहा था इस देश के अंदर जो भी बड़े चेंजेस हुए हैं ना, ये मूवमेंट से हुए हैं। ये मिशन करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये सब सेल्फ ड्रिवन हो। मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा टारगेट मेरा ये। लेकिन आप हेडोनिज्म को छोड़ के देश के लिए, दूसरों के लिए काम करोगे तो वो मूवमेंट फॉर्म में ही हो सकता है। फिर वो गांधी जी का मूवमेंट हो या इमरजेंसी के विरुद्ध मंदिर मंडल या लेटेस्ट अन्ना मूवमेंट। लेकिन अभी तक जितने मूवमेंट हुए ना, ये सारे मुर्दाबाद मूवमेंट हुए। इट्स लाइक वांटिंग टू ब्रेक अ बिल्डिंग विदाउट हैविंग द ब्लूप्रिंट एंड द प्लान टू मेक अ न्यू वन। तो बड़े नेगेटिव मूवमेंट्स हुए। और मैं ये सोच रहा था कि मैं हिंदू हूँ, तो हमारे में सोचते हैं 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। तो ये लाइफ तो ये पर्पसलेस, मीनिंगलेस लाइफ जीना, फैमिली, फ्रेंड, पैसा, ये मुझे लगा बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफ है। इससे बड़ी लाइफ हो सकती है। और 0 साल से 1700 साल तक हम लोग सोने की चिड़िया थे। वी आर 33% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। और आज हम लोग 3.28 ग्लोबल इकोनॉमी है, 0.8% ग्लोबल ट्रेड है। तो मुझे लगा कि अगर बदलना है तो कोई बाहर से नहीं आने वाला है, ये हम ही को करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि काम करूं तो मैं कहाँ करूं। आई विल ट्राई टू ओके ऑल श्योर sorry about this. Gravity of what you've done. Yeah, okay. So I was a typical urban guy. I'd never seen a village in my life except in Lagan. He's made the best reference. So, and I felt that over 60% of India lives in villages, and it's best that if I can transform villages, that's the only way that I can transform this country. So I thought, which is the worst place to go to? So the highest farmer suicides were in Marathwada. The worst district in Marathwada was Bid. And in that district, there were 2 talukas which were
which had a lot of farmer suicides, extreme miseries, poverty, Asti and Bid. But then I heard that Bid is the Munde family area and there is lawlessness and guns and swords. So I said, this is the place I will work. Because if I can change this, then I can change the nation. So I went and started working there. And typically management guy, I'd never seen a village. I was an urban guy. People go from village to city to globe. I went the other way around. And I was sure I wanted to do that. I did not know Marathi. And I sold my house in Mumbai. And I started living in the villages. And like a typical management guy, somebody up there is driving it. Nothing to do with me. Yeah. So, what was that? Sorry. So I went there like a typical management guy. I thought I knew everything. And just a bit of fine tuning and I will be able to transform villages. So it took me 3 years to understand that I know nothing. And I had to first unlearn before I started learning. I started working in the villages, staying with them, started understanding a lot of things. And we were working initially in 106 villages, 15 in a very focused way. I'll just give you a 2-minute story. There was a village called Revli there, a small village. And typically, the meetings in villages take place in the temple premises. And I was speaking with my broken Marathi. And while I was speaking, somebody was speaking over me. So I got very irritated. And I said, at least don't drink and come to the temple premises. But post the meeting, I felt maybe I should not have said that. He must be somebody's brother, somebody's uncle. To publicly humiliate him was not a good thing to do. But the Sarpanch took that very seriously. And at that time, what used to happen, that people used to come to listen to me. But most of them were men. And without music and without female, you can't do a movement. So I felt I should not have said it, but the Sarpanch took it seriously. In the evening, he went to a liquor shop. They make those illicit inside the ground. And he told him that 7 people have just died of cirrhosis of liver. And at night, people are drunk and sleep on the roads. Women had started drinking. 10-year-olds were drinking. Why don't you stop selling liquor? I don't know what happened. It was Sandhya Kal ka time tha. It was twilight time. And he said, I have 7 days worth of stock. Let me finish this. And then I will stop selling liquor. So the Sarpanch called me. He said, this is what happened. I said, I have hit onto a gold mine. So at that time, I used to come on television every day. I was quite a known person then. So next day, I went and caught the feet of that liquor seller. And I said, God has come within you. How will you run your family? I will give you 3 pregnant goats. You start goat rearing and start earning money and stop selling liquor. So after 7 days, he stopped selling liquor. I gave him 3 pregnant goats. And then with the help of the police, we started raiding each and every illicit shop. And the men folk would typically run away. And I would catch the feet of the woman and said, Mataji, till I am there, the raids will not stop. How long can you live a life like this? Stop selling liquor, I will give you 3 pregnant goats. And that 3 pregnant goats, in 15 days' time, stopped the sale of liquor in the entire area. And not just that, every night, me and the woman and the children would carry mashals and say, Daru Banji Jhalij Paije, Daru Bandi Jhalij Paije. And the woman would sit outside the liquor shops and do Ramdhun. So in 15 days, liquor sales stopped. It did not mean that people stopped drinking. There were people who used to go further, but the incidence of drinking reduced. But most importantly, the movement began. Then the woman started saying, my brother has come from Mumbai to help us. And then we used to have rows of women before the main stroke even started. So that was my experience of converting this entire thing into a movement. So having worked there on every aspect, typically एक NGO होता है ना,
He feels he'll do a village transformation, 360 degrees. So I also went with that same thought, 360 degrees, education, healthcare, capacity building, water management, incomes, governance, so many things, skill development. But I thought in 2018, I think I thought that if I work like this, I would be able to change 25, 50, maybe 100 villages in this lifetime. And there are 640,000 villages in India. So it was time to pivot. So I said, if farmers have income, then they can look after education, healthcare. I think they are overrated in any case. So we started, and there they were growing cotton and soya, where they were earning around 15 to 20,000 rupees an acre per year. So we changed the cropping pattern. You saw all that, so I will not repeat it. But now they are earning anything between 2 to 3 lakh rupees an acre, from 15 to 20,000. And we have scaled up from those 15 villages, from that 106 villages, to 2,800 villages across 23 districts in India. And till now, we have planted 3 crore trees. So what has happened is we are growing them in farmers' land. So our cost per tree is very low because the maintenance and all of that is taken care by the farmers themselves. And because of, it has multiple effects. Because of this, their incomes grow, social unrest reduces, problems take place. But most importantly, I feel the easiest, the cheapest, and the best method to fight the climate crisis is mass plantation of trees. And in Parli, in that place where we had 6 droughts in 8 years. In the last 4 years, it's raining like Cherrapunji. So the greenery attracts more monsoon, and the monsoon gives more greenery. So that's virtuous cycle has started. So now I'll final one point and then I will cease talking. So I used to think that where does poverty emanate from? So when we are flying and we look down from the window, we'll see these small jigsaw farms, small. That is where the poverty comes. Because in every generation, there is fragmentation of land. And the size of the land becomes so little that you cannot look after your family. So you come to cities, you stay in slums. So urban poverty, rural poverty, everything starts with fragmentation of land. Now China has only 2/3 of the total arable land of India, but it produces 3 times more. They have 13.95% of fruit plantation, while we have only 3.21. So I started thinking that if we were to increase our farming of fruit crops with an income of 1.5 to 2 lakhs also, then it would increase 3.23% of India's GDP. So while we are working at the worm's eye level, but if you look at it from the bird's eye, you can see this can have a massive impact on the economy of this nation. So we are working and we continue to work. And there are 700 crore fruit trees that are planted in India. So if you assume 700 trees per farmer, we have 1 crore farmer who are planting fruit trees without having the access to modern technology, knowledge, etc. So now we are making a world-class center of excellence there so that we can train farmers and it will become a magnet to bring in the best so that their yield can increase by a factor of 4 minimum. I thank you so much for listening to me. Bharat Mata Ki! I think because we have run out of time, so we would like to call it a night and not have a Q&A session. Although I know we have lots of questions, but then we can ask them interpersonally because all the speakers are still here and we can talk to them while at dinner.